Hi students, welcome to the fifth lecture on accountancy important question series for boards examination. पहले वाली क्लास के अंदर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को डील किया था। 2 पार्ट की वीडियोस है मेरे चैनल पे, वो दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस पार्ट में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक भी 2 पार्ट के अंदर कवर किया जाएगा। पहला पार्ट जिसके अंदर छोटे क्वेश्चन है और दूसरा पार्ट जिसके अंदर बड़े क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम देखा 3 नंबर का। 4 पार्टनर्स है, उनका हमें पीएसआर रेशियो गिवन है। एक फेब को एक पार्टनर रिटायर होता है और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स 3:1:1 की रेशियो में बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। पार्टनर के रिटायरमेंट के समय फर्म की जो गुडविल थी वो 3,60,000 गिवन है हमें। अपनी वर्किंग को क्लियरली दिखाते हुए जो भी नेसेसरी जनरल एंट्री है वो हमें फर्म की बुक्स में पास ऑन करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दी बुक्स ऑफ डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एंट्री की डेट है 31 Jan 2017। अब एंट्री करने से पहले हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी वर्किंग नोट। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। जैसे कि हमें पता है जब भी एक पार्टनर रिटायरमेंट में या डेथ के केस में फर्म को छोड़ के जाता है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाता है और उसके जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स में जो गेनिंग पार्टनर होता है वो उसको कंपनसेट करता है, जिसकी जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल काउंट। हमारे केस में 4 पार्टनर है, उनका न्यू रेशियो माइनस देयर ओल्ड रेशियो। जैसे कि हमें पता है अगर न्यू रेशियो ज्यादा है और ओल्ड रेशियो कम है तो पार्टनर गेनिंग है, अगर न्यू रेशियो कम है और ओल्ड रेशियो ज्यादा है तो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं रवि, कुमार और गुरु तीनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और सिर्फ सिंगल पार्टनर कवि गेनिंग पार्टनर है। तो इस केस में कवि कंपनसेट करेगा रवि, कुमार और गुरु को, जिसकी जनरल एंट्री होगी कवि कैपिटल काउंट डेबिट टू रवि कैपिटल काउंट टू कुमार कैपिटल काउंट टू गुरु कैपिटल काउंट। अमाउंट निकालने के लिए जो भी टोटल फर्म की गुडविल है उसके हिसाब से अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी। सो इफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन टू अस एज 3,60,000 तो हर एक पार्टनर अपने अपने गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से वो उतना अमाउंट लाके देगा। सो फॉर इंस्टेंस कवि विल ब्रिंग 81,000, Ravi will get from this 81,000 rupees 18,000. Similarly, Kumar will also get 18,000 and Guru will get 45,000. Generalizing these entries, 81,000 in debit, 18,000 credit, 18,000 credit and 45,000 credit. Narration में आप डाल सकते हैं adjustment made for treatment of goodwill on Guru's retirement. Simple question है and it's a good question for 3 marks. Let's come to question number 2. Keith, Veena and Veena were partners in a firm जिसका रेशियो और लॉस इक्वल है। उनकी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई आइटम नहीं है। 30th June 2019, Veena died. According to the partnership deed, the executor of the deceased partner will entitled to, उसको क्या क्या मिलेगा, उनकी कैपिटल का जो बैलेंस है, जिस डेट तक उनकी डेथ हुई है 25,000 पर एनम की सैलरी, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसका 2 टाइम्स विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल और उस गुडविल के हिसाब से डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को उसका शेयर मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of the death on the basis of average of 3 completed year profit before death। ये पॉइंट किसी से रिलेट करता है, पार्टनरशिप की डेथ के केस में अगर पार्टनर की डेथ मिडिल ऑफ द मंथ होती है, मिडिल ऑफ द ईयर होती है सॉरी, तो उस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ जो जिस टाइम पीरियड के लिए डिसीज पार्टनर ने काम किया है आपके फर्म में उतने टाइम पीरियड के लिए उसको प्रॉफिट मिलता है। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस पॉइंट पे नहीं बना होता तो हमें एक बेसिस ऑफ कैलकुलेशन दे दिया जाता है, जो कि हमारे केस में क्या है, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। तो हमें पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और हम ये मान के चलेंगे कि जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है उस ईयर का प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए था एंड अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमें 4 साल का 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। वी हैव टू प्रिपेयर वीनास कैपिटल अकाउंट जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। सो लेट्स बिगिन। बिफोर मेकिंग द कैपिटल अकाउंट लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। So if average profit is 1,20,000, Veena's share will be, since 1,20,000 is the profit of complete 12 month. Veena died on 30th June. She will get profit for April, May and June month. That is for 3 months. And her share of profit is 10,000. Similarly, for calculation of goodwill. For goodwill, it is given to us. Goodwill is calculated on the basis of twice the average profit of past 3 years. In our case, हमने average profit की calculation already कर ली है, which is 1,20,000 and twice of that will be our goodwill. 1,20,000 into 2 comes out to be 2,40,000. Now 2,40,000 is the goodwill of the entire firm. In this case, we have to find out the PSR of the continuation firm.
and regarding PSR there is no information given to us. इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि पुराना रेशियो ही नए रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस हमारे केस में कीथ, बेनी एंड वीना इनका प्रॉफिट रेशियो 1:1:1 था. Since Veena is dead, it will be assumed that Keith and Benny will continue their ratio in the 1:1 profile. They are not going to change their proportion. And this will be our new PSR ratio as well as this will be our gaining ratio. So in this case, goodwill share of Veena, that is the deceased partner, is 1/3 of 2,40,000, which comes out to be 80. And this 80 will be given by Keith and Veena in 1:1 ratio, that is 40,000, 40,000. Let's start with the capital account. In the books of Keith, Veena and Veena, we are preparing Veena's capital account. Since the question only demands one capital account, so we are also going to prepare the particular partner's capital account. Starting with the opening balance, then we will distribute any reserve, profit, whether accumulated profit or accumulated loss, in the PSR ratio. We have 30,000 of general reserve. So 30,000 will be given to Veena for her profit share, which is 1/3, which comes out to be 10,000. Then we are given that we have to pay salary to Veena 25,000 per annum. Since she is working with us for 3 months and 25,000 is the salary for entire 12 months. So 3 months salary will come out to be 6,250. By Veena's salary is 6,250. Then we have a profit share. The entry is profit and loss suspense account debit to partner's capital account. So by profit and loss suspense account, ये वो प्रॉफिट है जो 3 महीने का प्रॉफिट है जो हमने एवरेज के बेस पे निकाला है, which is 10,000. एंड फाइनली गुडविल कंपनसेशन की एंट्री जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स वीना को लाके देंगे, दैट इज बाय कीथ्स कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड बाय वीनास कैपिटल अकाउंट 40,000. इसके अलावा ऑन 1st June, दैट इज बिफोर हर डेथ, वीना आल्सो विथड्रू 15,000 फॉर हर डॉटर स्कूल फी. So these drawings will be reduced from her capital account. So the remaining will be transferred to the Veena's executor account. This will be our balancing figure. The total of this side comes out to be 1,81,250, 1,81,250, 1,81,250 minus 15,000, which gives us 1,66,250. Since the question only asks to prepare capital account, which will be given to an executor, so this will be sufficient for your answer. Let's move on to the third question. X, Y, Z were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 2:2:1. The firm closes its books on 31st March. Y died on 24 June 2018. On Y's death, goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Y share of profit of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales. Sales during the year 1718 was 15 lakh and profit earned during that year was 3 lakh. Sales from 1st April 2018 to 24th March was 2 lakh. Total amount payable to Y executor on his death was 1,75,000. Thus, amount was paid to them on 15/7/2018. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. ये अच्छा क्वेश्चन है. इसके अंदर जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो सेल्स के बेस पे है. बेसिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम पास्ट ईयर के बेसिस पे एक एवरेज प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे कि अगर पिछले साल हमारी 15 लाख की सेल थी और पिछले साल 3 लाख का प्रॉफिट था तो हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या था या हमारी प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी, और उस प्रॉफिट परसेंटेज को हम अपने करंट ईयर की सेल्स पे अप्लाई कर देंगे. तो जितने मंथ की आपको सेल्स गिवन है उतने मंथ का आपके पास एक टेंटेटिव प्रॉफिट आ जाएगा एंड दैट प्रॉफिट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर. ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है. So let's start. Question number 3. In the books of XYZ, we are passing the journal entries. Again, date, particulars, then we have the LF, we have amount of debit and amount of credit. Now, before passing the journal entries, let's do some working note calculations. Total sales for 1780 is given to us 15 lakh. Total profit for the same year is given to us as 3 lakh. तो इतनी इंफॉर्मेशन यूज करके अगर मैं प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहूं तो दिस विल बी 3 lakh over 15 lakh into which comes out to be 20%. Now, the total sales for 1st April 2018 to 24th June 2018, that is only till the date of the death of the partner, is given to us 2 lakh rupees. So, profit will be 20% of 2 lakh, which comes out to be 40,000. This 40,000 belongs to all of the partners. What will be the share of the deceased partner? Y share will be 40,000 into his share of profit, which was 2/5, which comes out to be 16,000. Another calculation for goodwill.
it is given to us that the goodwill of the firm is valued at 1,20,000. Since Y is the deceased partner, he will get his share of goodwill, which comes out to be 48,000. Now, since nothing is given to us regarding the new PSR ratio, so what we will assume that the continuing partners, they will keep on having the same proportion of their ratio in the new firm also. So 2:1 will become our NPSR as well as gaining ratio. In that case, this 48,000 will be bought in by the continuing partners, which are X and Z, in the ratio 2:1, 2 by 3 and 1 by 3, which comes out to be 32,000 and 16,000 respectively. Once we are done with that, let's start. Now, the date of the death of the partner is given to us. Since the dates are given to us, we will have to follow that specific format. 2018 जून 24th, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले हम गुडविल की एंट्री कर देते हैं. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे. जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to the sacrificing partners, Y's capital account. Y will get 48,000 rupees. In what ratio? 32,000 and 16,000. On same date, उनको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का पोर्शन भी मिलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने निकाला था 16,000. Then the total balance which has been given to us is 1,75,000. This is the amount which has been transferred to the vice executor account and the same has been paid to him. 1,75,000, 1,75,000, and the date of the payment has also been given to us, which is 15 June 2018. Vice executor account debit to bank 1,75,000, 1,75,000. नेक्स्ट के लिए पहले में आप डाल सकते हैं being deceased partner share of goodwill transferred to his capital account. सेकंड केस में हम डाल सकते हैं being share of profit till date of death credited to vice capital account. तीसरे केस में हम डाल सकते हैं being vice capital account transferred to her executor account. और फाइनल में हम डाल सकते हैं being paid the amount due to by executor. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. 4 मार्क्स में क्वेश्चन एंटिसिपेटेड है बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो थोड़ी यूनिक है. लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:5:6. On 31st March, Girdhari retired. On the date, the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment stood as 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. Girdhari's retirement, goodwill of the firm is valued at 1,14,000. Revaluation of asset and reassessment of liabilities resulted in a profit of 6 lakh. General reserve in the books is 30,000. Amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari 2 yearly installment of 75,000 each, including interest of 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 years, and the balance including interest in the third year. The firm closes its books on 31st March every year. Prepare Girdhari loan account till it is finally paid, showing the working note clearly. ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है. और लोन अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि उसके लोन अकाउंट में फाइनल अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 4 का लोन अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट बना के फाइनल पेमेंट की एंट्री निकाल लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर व्हिच इज गिरधारी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी कैपिटल का बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज 1 लाख. हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एज 38,000. हिज शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. एंड हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, अगेन जनरल रिजर्व हमें गिवन है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 1,50,000. दिस वर्किंग नोट in itself contains 1 mark. Once we have the amount, let's start with the loan account. In the books of Banwari, Girdhari and Murari, we are preparing the retiring partners loan account. As you can see, format हमने पूरा बनाया है क्योंकि इसके अंदर में dates भी given है. So let's start. 2014 April 1st. We have already calculated कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा गिरधारी की कैपिटल से. गिरधारी कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1. This comes out to be 1,50,000. Now it is given to us that the amount of this 15 lakh will be paid by 75,000 each in 2 yearly installment, and an interest of 10% will be given on the outstanding balance. So if yearly installment is to be given 1 year from 1st April will end on 2015 March 31st. This will be our first date of the installment. The first thing to do in any interest account, loan account, is to first book the interest. In our case, because this is the first installment, so 1,50,000 is the outstanding interest, and this is of 10% and complete 12 months. So calculation will be for 12 months. This comes out to be 15,000. After booking the interest, the same date, 2015 March 31st,
will be the date of first installment to bank account. Now, interestingly, it has been already given to us that 75,000, the amount of installment, include the interest on outstanding balance. We have calculated the interest on outstanding balance and the amount of installment is already given to us. So that means that 75,000 is inclusive of our interest. So March 31st, to balance carried down, the remaining balance is 90,000. 1,65,000, 1,65,000. This balance will be carried forward to the next financial year, that is 2015 April 1st. My balance brought down 90,000. Again, the 12-month period will end on March 31st, 2016. First thing we'll do is book the interest on the outstanding balance, that is 90,000 into 10%, which comes out to be 9,000. Again, on the same date, 31st March 2016, the second installment will be given to bank account. Again, the amount of installment 75,000 is already given to us. So what will be the balance carried down? Is 24,000. Carrying forward it to the next year, 2016 April 1st, by balance brought down, this comes out to be 24,000. Now, for the last year installment, what they are given to us, the balance including interest in the third year. Again, it's just making the point clear that this amount 24,000 will be given inclusive of the interest for the final year. So final year will end on 31st March 2017 by interest 24,000 into 10%, which is 2,400. And on the same date, 2017 March 31st, the final amount will be paid 24,000 plus 2,400 interest, which comes out to be 26,400. This finishes our loan account. It's quite simple. It's a 4-mark question. This will carry 3 marks and the working will carry 1 marks. Loan account anticipated है, आ सकता है. This ends our part 1. Thank you for watching. If you like my content, please like and subscribe my video and share it with your friends. Thank you so much.